अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है आज का वो क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज हम यहाँ पर एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। लेकिन आपको पता ही है कि मैटर जो है, मैटर ब्रॉडली इट एग्जिस्ट्स इन फॉलोइंग 3 स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड and gas. Besides these 3 states, we have the other 2 states of matter as well, that is the plasma state and the supercondenser state. लेकिन उन 2 states के बारे में हम आज यहाँ बात नहीं करेंगे, नहीं हम solid state के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ये solid state है that is in your 12th class, एक unit है वहाँ पे, that is the solid state. और आज स्टेट्स ऑफ मैटर में जो है वो हमें डिस्कस करना है वहाँ पे, यहाँ पे दैट इज द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट के 3 ही टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, दैट इज द विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर, और गैसियस स्टेट हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग थ्रू द गैसियस स्टेट, आज का जो टॉपिक है दैट इज intermolecular forces. Dear students, intermolecular forces अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए what are intramolecular forces and intermolecular forces. Intramolecular forces हम intramolecular forces, we have 2 types of forces, that is one is the intramolecular forces and number second that is intermolecular forces. Now what are intramolecular forces? Intramolecular forces किन forces को कहते हैं? Intra means within, वो forces which occur within the molecule are known as intramolecular forces. For example, ये intramolecular, for example if we take the example of hydrogen chloride, जो ये बॉन्ड है इनके दरमियान which is formed by the sharing of electrons, ये force जो है that is called a chemical bond. ये इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल लूंगी सोडियम क्लोराइड की, जो ये बॉन्ड यहाँ पे बनता है by the transfer of electrons from the सोडियम टू क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके दरमियान है, दिस इज ऑल्सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। नाउ व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किन फोर्सेस को कहते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं दे आर द फोर्सेस व्हिच ऑकर विद बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर molecular forces are the forces which occur between the neighboring molecules. उन फोर्सेस को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, दोज फोर्सेस व्हिच ऑकर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, दोज फोर्सेस आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नाउ द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नंबर 1, टाइप्स ऑफ intermolecular forces. Intermolecular forces are our following types. Number first force जो है that is called as the dipole interactions. These are also called as intermolecular forces or intermolecular interactions. Interactions भी लिख सकते हैं, interactions. Dipole interaction. नंबर सेकेंड जो है that is dipole induced dipole interaction.
नंबर थर्ड जो है दैट इज इंड्यूसर डाइपोल, इंड्यूसर डाइपोल, इंड्यूसर डाइपोल, डाइपोल interactions, interactions. And number fourth जो है that is the ion dipole interactions. And जो fifth type है that's called as the ion inducer dipole, dipole interactions. So these are the following types of the intermolecular forces or intermolecular interactions. The first three, that is the dipole-dipole interaction, dipole-induced dipole interaction, and the induced dipole-induced dipole interactions are all these three, they are known as the van der Waals forces. While as these two, they are simply the intermolecular forces or intermolecular interactions. The first three, they are called as the van der Waals forces as well. So हम फर्स्ट डिफाइन अब करेंगे दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, किन इंटरेक्शंस को कहते हैं. Dipole dipole interactions. First of all, you should know what is a dipole. These dipole, or we can say that is the dipole dipole interactions. First point हम यहाँ पर याद रखेंगे. These interactions they occur in the polar molecules. Polar molecules occur in polar molecules. Now what are polar molecules? For example, यहाँ पर मैं example लूँगी polar molecule की, that is hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड में जो बॉन्ड है विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू, दैट इज हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू. लेकिन जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ. वो क्लोरीन जो यहाँ पे है ये अट्रैक्ट करता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरह, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. खाली यहाँ पर ये क्लोरीन जो है इट अट्रैक्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ and results the development or leads to the formation of delta negative charge on chlorine, and here we have the delta positive charge. Delta negative इसलिए क्योंकि electrons they are attracted more towards the chlorine. So यहाँ पर जो ये चार्ज डेवलप हो गई हाइड्रोजन और क्लोरीन पर, this is called a dipole, separation of charges, and this is a polar molecule. The interactions between the polar molecules is the example of dipole dipole interaction. यही हम लेंगे एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड की. HCl, it has a delta negative charge and there is a delta positive charge. This will attract the hydrogen end of the another chlorine molecule, that's the positive part, negative, and there is the interaction take place between the negative and the positive. These interactions are known as the dipole dipole interactions. We have the another molecule as well, Cl, positive and negative. These interactions are known as dipole interactions. In this dipole dipole interaction यहाँ पर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है पोलर मॉलिक्यूल वो दूसरे मॉलिक्यूल को डायरेक्ट करता है फॉर द इंटरेक्शंस. दैट मीन्स डायरेक्शन क्या मतलब क्या है कि एक का नेगेटिव पार्ट जो है वो दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करता है. इसी तरह से अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो वो यहाँ के नेगेटिव को अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा. तो देन द इंटरेक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द टू, दोज इंटरेक्शंस आर नोन एज द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. एंड स्पेशल केस जो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. Now what is hydrogen bonding? Hydrogen bonding is the electrostatic interactions between the hydrogen, electrostatic interactions between the hydrogen and most electronegative elements of the periodic table, that is FON.
fluorine, oxygen, nitrogen. For example, I have the example that is the hydrogen fluoride. ये मॉलिक्यूल है हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड. अगर हम इसमें दिखा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये जो बॉन्ड है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द फ्लोरीन, इट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स अ नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड. बट फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज. नाउ अनदर हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर भी यही होगा, दैट इज डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव. Similarly, we have another one, delta negative, delta positive. The interactions takes place between them. These interactions are the dipole-dipole interaction, but this special type of the dipole-dipole interactions are known as the hydrogen, or it is known as the hydrogen bonding. So we have the first type that's called the dipole-dipole interaction, where the interaction takes place between the polar molecules. Those are electrostatic in nature. And we have the special type of the dipole-dipole interactions, that is the example, that is hydrogen bonding. Now we have the second one. दूसरा टाइप जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का, वो है डायपोल इंड्यूस्ड dipole interactions. These are the interactions which take place between the polar molecule and a non-polar molecule. For example, अगर हम यहाँ पर लेंगे एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल, that is the A-B. Suppose if this B atom, it is more electronegative, it develops a partial negative charge and it is partial positive. If A is less electronegative as compared to the B and B is more electronegative, so यहाँ पर कौन सी चार्ज आएगी, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, and यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. और inducer, it will induce the dipole in a non-polar molecule. For example, we have the example of the non-polar molecule, such as we have the iodine molecule. When this negatively charged atom of a polar molecule, it will come in contact with that of a non-polar molecule, it will attract its positive part, and the electrons, they are shifted towards another iodine atom. And here we have the development of the delta positive and here delta negative, and then the interaction takes place between the two. That is this interaction is called as the dipole induced dipole interaction. That means this dipole, it has induced a dipole in a non-polar molecule. This interaction is known as the dipole induced dipole interaction. Number third, we have induced dipole interactions. Number third जो है, that is induced dipole induced dipole interactions. This type, or this, to explain the induced dipole interactions, we take the example of the noble gases. For example, we have a noble gas. Suppose we have neon. We have the neon atoms in a crystal of neon, and there is no force of attraction between the two. There is no bond formation between the two, but still they remain attached to each other. Now, which force exists between these neon atoms? Now, we say that at this neon atom, it possesses the electrons, and these electrons, they are continuously revolving around the nucleus, and it is said that it was these forces, these induced dipole interaction, were first studied by Fritz London. He said that जब ये atom जो है neon का atom, it possesses the electrons. These electrons, they are continuously in motion at any instant of the time. ये electrons जो है ये चले जाते हैं towards the periphery like this periphery, and the nucleus, it is shifted or it gets distorted towards the other side. Result is the formation of a transitory
or momentary or instantaneous dipole gets developed in this neon atom and the neighboring, and then it attracts this positive part, it will attract the negative, induces the dipole in the neighboring neon atom, and then the interactions take place between the two. Those interactions are very weak, and this interaction is also called as the London dispersion forces and exist, and then it gets developed through the whole crystal, and these interactions are known as the dipole induced dipole interaction. क्योंकि इसमें भी डायपोल नहीं था, इसमें भी डायपोल नहीं था, लेकिन ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ और न्यूक्लियस अनदर तरफ, मतलब अनदर इन towards the other end, and then there is the development of a momentary, or we can say that the instantaneous dipole gets developed, and then it will induce the dipole in another atom, and then its force, it gets dispersed in this, and these forces are known as the induced dipole interactions. Now we have these three, collectively these three, they are called as the van der Waals interactions. Now we have the other two. number fourth type जो है, that is ion, fourth जो है that is ion dipole interactions. It is self-understanding word. जो यहाँ पर interaction जो हो जाती है, that takes place between an ion and a dipole. That means ion and a polar molecule. These interactions are explained, or this type of interactions, for this to explain this type of interaction, we take the example of dissolution of, example, that is dissolution of sodium chloride in water. जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, एंड दी सोडियम एंड क्लोराइड आयंस दे गेट अट्रैक्टेड, दोनों को अट्रैक्ट करता है वाटर. तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इंट्रैक्शन, दैट इज द सोडियम. वाटर जो है दैट इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल. वाटर इज ऑल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल. हम इसमें दिखाएंगे डाइपोल. Being floor, oxygen जो है that's more electronegative as compared to the hydrogen atoms, so there is the development of the partial negative charge on the oxygen and partial positive charge on the hydrogen atoms. Now we have the another molecule, इसमें भी यही होगा delta negative positive. We have another molecule delta positive, and we have here the sodium ion. It is positively charged. They undergo interaction with the negative part of the oxygen atom of the water molecule, and the interactions are known as the ion dipole interactions. Interactions take place between the two, electrostatic interactions. This type of interaction between the sodium ion and the water molecules, those are called as the ion dipole interaction. इसी तरह से क्लोरीन भी दिखा सकता है in ion dipole interaction with water molecule. लेकिन क्लोरीन जो है that's negatively charged, that undergoes interaction with the positively charged the hydrogen atoms which possesses the partial positive charge. They undergo interaction with the chlorine, and those interactions are also called as ion dipole interactions. For example, हम यहाँ पर दिखाएंगे Cl negative undergoes interactions with hydrogen of water. Interaction takes place between the two. Similarly, we have another water molecule here, delta negative, and this is delta positive, and the interactions takes place. These are the examples of the ion dipole interactions. Now we have the last type, that is called as the ion induced dipole interactions.
ये भी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, दैट इज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन जो है वो इंड्यूस करता है डाइपोल। किस में इंड्यूस करेगा डाइपोल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनमें डाइपोल होता है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल नहीं होता है, तो उनमें वो डेवलप करता है डाइपोल। कौन? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन जो है वो इंड्यूस करेगा इंटरेक्शन डाइपोल in a non-polar molecule, and then the interaction takes place between the ion and that molecule in which the dipole has been induced. Such interactions are called as the ion-induced dipole interactions. For example, अगर हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल नाइट्रेट आयन की, NO3 नेगेटिव आयन की, and we brought it in contact with that of the iodine molecule. This is the negatively charged ion. It will attract the positive. That means when it comes in contact with this non-polar molecule, it will attract its positively part, that is the nucleus, towards itself, and the electrons they get shifted towards the other end, and then the interactions takes place, and then this means that this ion, it has induced a dipole in this non-polar molecule, and then the interactions takes place between the two. Those interactions are called as the ion induced dipole interaction. So today आज जो हमने पढ़ा that is the intermolecular forces. Intermolecular forces कौन से forces होते हैं? वही forces होते हैं which take place or which occur between the molecules or between the neighboring molecules. उन forces को हम कहते हैं intermolecular forces or intermolecular interactions, and we have the following 5 types of the intermolecular forces जो हमने एक एक करके पढ़े. This was all about the intermolecular forces. Now in the next video lecture we are going to discuss the gaseous state. Thank you so much.